गुड मॉर्निंग दिरा। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हाँ, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। हाँ, शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। हाँ, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। हाँ, गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। हाँ, इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्हीं से है हर सुबह तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। जीते जा बस जीते जा, जीते जा बस जीते जा, हर उस पल को बस जीते जा, जिसे चाहता है तू, जिसे मांगता है तू, जिसे जानता है तू। जीते जा बस जीते जा, जीते जा बस जीते जा, हर उस पल को बस जीते जा, जिसे चाहता है तू, जिसे मांगता है तू, जिसे जानता है तू। जीते जा बस जीते जा, इतना आसान नहीं माना पर मुश्किल भी नहीं मानो तुम। हाँ, इतना आसान नहीं माना पर मुश्किल भी नहीं मानो तुम, पर मुश्किल भी नहीं मानो तुम। मानो तुम, जानो तुम, पहचानो तुम, अपनाओ तुम। मानो तुम, जानो तुम, पहचानो तुम, अपनाओ तुम। जीते जा बस जीते जा, हर उस पल को बस जीते जा, जिसे चाहता है तू, जिसे मांगता है तू, जिसे जानता है तू। जीते जा बस जीते जा, जीते जा बस जीते जा, हर उस पल को बस जीते जा, जिसे चाहता है, जिसे मांगता है, जिसे जानता है तू। दिरा, यू नो व्हाट, किसी चीज़ के बारे में जान लेना कोई बड़ी बात नहीं होती, उस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करना बड़ी बात होती है। जैसे कि क्या तुम्हें नहीं पता, डेली सुबह में जल्दी उठना चाहिए, डेली पढ़ना चाहिए, डेली रनिंग करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। दैट मीन्स अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देना चाहिए, मतलब अपने आप को हेल्दी रखना चाहिए, स्वस्थ रखना चाहिए। लेकिन क्या हम करते हैं डेली? Two successive discounts of 25% and 20% are given on an article. What is the net discount? Now, let article price is 100. That means so. Two successive discounts, 25 and 20. That means 100 into 75 into 80 by 100. 100 खत्म, 1010, 510, 15 75, 2 का 2, 2 चौका 15 चौका 60। तो हमने माना कितना था 100, आया कितना 60।
दैट मीन डिफरेंस है हमारा 40% का। यही डिफरेंस हमारा नेट डिस्काउंट है। सो आंसर इज 40। दैट मीन्स इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही इन दोनों का नेट डिस्काउंट होता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जितना होगा वही इसका नेट डिस्काउंट हो जाएगा, क्योंकि जब हम किसी संख्या का परसेंट सोर्स निकालते हैं तो उतना ही आता है जितना इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। दैट मीन्स यहाँ इनके बीच डिफरेंस 40 है। सो अगर नेट डिस्काउंट निकाले तो हो जाएगा डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू 40/100, क्योंकि हमारा डिफरेंस यहाँ 40 का है, और 100 क्योंकि परसेंट में निकालने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, इंटू 100 क्योंकि टोटल नेट डिस्काउंट निकालना है, इसलिए 100। So 100 cancel and 40. That means net discount हो जाएगा 40%. Two successive discounts of 50% and 30% are given on an article. What is the net discount? Let article का price 100. And according question, two successive discount of 50% and 30%. That means 100 into 50/100 into 70/100. 100 cancel, 120 cancel, 7 बचे 35. इन दोनों के बीच है 65. That means हमारा आंसर हो जाएगा 65%. That means net discount हो जाएगा 65. A student scores total 50% marks in 6 subjects of 100 marks each. He scores 30% of total marks obtained by him in subject 1. What is the score in subject 1? So total subject is 6 and each subject contains 100 marks. That means so total हो जाएगा 600 marks and he obtained 50% marks. That means 600 का 50%. That means 600 into 50/100. 6. That means he obtained 300 marks. That means 300 marks he obtained. Now subject 1, 30% of total. Total he obtained. That means 300 of 30%. 90. So 90 marks in subject 1 he obtained. So answer is 90. 40% of 500 eggs are rotten. How many eggs are not rotten? That means 500 का 40%. That means 200 eggs are rotten. So not rotten eggs are 500 minus 200. That means 300. That means 300 eggs are not rotten. That means answer is 300. Least common multiple of A and B is 18. Least common multiple of C and D is 24. What is the least common multiple of A, B, C and D? That means 18 और 24 का LCM ही A, B, C and D का LCM होगा. That means 18 into 24. 4 से 12, 1272. That means 72. Answer. The highest common factor of the two numbers is 10. Which of the following can be the least common multiple of the two numbers? HCF is 10. That means LCM is वो संख्या होगा जो 10 से डिवाइड होगा. 10 that means लास्ट में 0 डिजिट होना चाहिए. So एक ही नंबर पे 0. So यही आंसर हो जाएगा हमारा 120. Cost price of an article is 5,000 rupees. The loss percent is 30%. What is the selling price of the article? That means CP is 5,000 rupees and loss percent is 30%. That means loss is 5,000 into 30%. That means 1,500 rupees loss. That means loss is equal to 1,500. So selling price, that means SP is CP minus loss. CP 5,000 rupees minus loss 1,500. That means selling price is 3,500 rupees. So answer is B. Don't count on overnight success. Before concluding, I had like to clarify a few things about positive thinking and the power of our thoughts. First of all, positive thinking doesn't mean that you will achieve your goals overnight. It's not as if you start thinking about making more money and the next morning you wake up and find a stack of dollar bills at your bedside. Not by a long shot. Success requires effort, commitment, and patience. And secondly, positive thinking doesn't mean you won't have any more problems. Believe me, you will have plenty of setbacks along the way. However, if you continue to believe in yourself, take action and persist, you will overcome those obstacles. Remember, you are constantly moving in the direction of your dominant thoughts. Everything you achieve in your lifetime flows from your thoughts and beliefs. Negative thinking is negative result. And positive thinking produces positive results. Keep your attitude window clean and bright so that the positive thoughts can come shining through. It simply makes no sense to think negative thoughts unless you want to get negative results. And I know you don't want that to happen. So from this point forward, choose your thoughts wisely and use this powerful principle to get fantastic results in your life. Lesson 3. Picture your way to success. You must first clearly see a thing in your mind before you can do it.
In a recent television interview, singer Celine Dion was asked if she ever dreamed at the start of her career that someday she had sell millions of records and be on tour, singing in front of tens of thousands of people each week. The singer replied that none of this surprised her, as she had pictured the whole thing since she was 5 years old. She was not bragging and has worked unbelievably hard to earn each bit of her success. What she learned at an early age was her ability to tap into the power of holding a vivid, powerful image. To picture the stars she wanted to become. World-class athletes also incorporate the power of imagery to reinforce in their mind exactly how they want to perform, whether it's a figure skater completing a difficult jump, a tennis pro acing his opponent with a perfect serve, or a golfer driving the ball long and straight down the fairway. Many top competitors mentally envision a successful outcome before actually achieving it in the real world. Visualization, however, is not something reserved solely for singers, athletes, or movie stars. In fact, it's something you have used since childhood to create the circumstances of your own life. Let me clarify what I mean. Visualization is often described as movies of the mind, inner pictures, or images. We all store pictures in our minds about the type of relationships we desire, the degree of success we will attain at work, the extent of our leadership ability, the amount of money we will earn and accumulate, and so on. Choice is yours, dear. Because एक ही तो जिंदगी मिली है, दिरा. एक ही तो जिंदगी मिली है, दिरा. Choice is yours. क्योंकि you know what? यथा दृष्टि तथा सृष्टि. डर के आगे ही तो जीत है. डर के आगे ही तो जीत है.